Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, welcome back to the lecture number 3. In this lecture, we will continue our translation of the chapter The Savior of Mankind. In the previous lecture, we have already done three I think we have done two paragraphs already in the previous video. And here in this video, we will try to cover three paragraphs more, like paragraph number 3, paragraph 4, and paragraph 5. Here you can see, here is the paragraph number 3, if you can see, and here is the paragraph number 4, and then the paragraph 5. Let me read this paragraph number 3, and then we will translate it one by one, and we'll try to understand the mechanism and the method with which we can translate one language into another language. Well, here it is, the paragraph number 3. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. This word is chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul sallallahu alaihi wasallam among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Well, class, we will translate one by one. Let's start with the paragraph number 3. Here is the paragraph number 3. I don't need to read it again. Just we need to read it, the difficult words, and then we will translate into Urdu language. Here is the difficult words. The very first word is century, जिसका मतलब सदी है. Mankind, जिसका मतलब बनी नो इंसान और इंसानियत है. Stood का मतलब खड़ी हुई थी. वर्ज कहते हैं धाना को, किनारे को, सिरे को, सिरा. Or chaos, chaos, chaos. Read it once again so that you can get the used to it. This word chaos, tabahi, afratafri, destruction, and there are so many words. Another from this chaos, destruction, termination, or you can say many other words can be used regarding this. Well, in the 5th and 6th century, here is another words, seem, मतलब लगना, नजर आना, civilization, तहजीब, तमद्दुन, ग्रो, परवान चढ़ना, फलना फूलना, क्रम्बलिंग, पारा पारा हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, पॉइंट, मरहला, नुक्ता, मुकाम, रेज्ड, मबूस फरमाया, भेजा, लिफ्ट, उठाना, लाना या निकालना, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, बनीनो इंसान, इग्नोरेंस, जहालत या गुमराही. Here is the translation. देखिए, in the 5th कहते हैं पांचवी और 6 कहते हैं छठी. सेंचुरीज का मतलब सदी है. मैनकाइंड का मतलब इंसानियत है. स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस. अब स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस एक फ्रेज है जो आपने याद करनी है. ऑन द वर्ज ऑफ द क्वेस. देखिए, ऑन preposition है. द वर्ज ऑफ chaos ये preposition फ्रेज है जिसका मतलब है तबाही के दहाने पर खड़ा होना. और who was standing on that brink of destruction? It was mankind. और mankind क्या? इंसानियत. तो इंसानियत 5वीं 6वीं सदी ईस्वी में तबाही के दहाने पर खड़ी थी, या 5वीं 6वीं सदी ईस्वी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी. It seemed, यूं लगता था, that the civilization which had taken 4,000 years to grow, it seemed, यूं लगता था, that the civilization, कि वो तहजीब, which जो had taken 4,000 years ago, जिसने क्या किया, जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लिए. यानी सिविलाइजेशन तहजीब है, which had taken 4,000 years, जिसको 4,000 साल लगे टू ग्रो, कि वो नशो नुमा पाती, वो बेहतर हालत में आ जाती,
had started crumbling, वो चूरा चूरा हो गई थी, वो टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये किस सिविलाइजेशन की बात हो रही है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अब से लेकर, अगर हम 2020 में मौजूद हैं, तो 2020 से लेकर इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2000 साल हो गए, 2000 साल और 20 साल हो गए ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए। ये जो हम कहते हैं ना 2020 एडी, तो आफ्टर द डिमाइस, और इसके बाद जो बी सी बोलते हैं, ये बिफोर द क्राइस्ट, या इसको हम जो ना एनो डोमिनी एडी का साल भी कहते हैं। तो उस वक्त से लेके 2000 साल पुराना, पहली बार 2 साल के बाद अब ये 4000 साल, ये वो रिटन हिस्ट्री है इंसानियत की, कि जिसने सफर तय करते करते यहाँ तक पहुंचा। तो वो 4000 साल जो लगे एक तहजीब को बनने में, इंसानियत को डेवलप होने में, वो इंसानियत जो है तहजीब थी चूरा चूरा हो गई थी, वो टूट फूट का शिकार हो गई थी। और फिर क्या हुआ कि इट स्टार्टेड क्रम्बलिंग, का मतलब टूट फूट का शिकार हो जाना। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी बंद अपने हाथ पकड़ा और उसको मसल दे तो वो चूरा चूरा हो जाती है ना, जो क्रम्बलिंग हो जाती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त के इस मरले पर, एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस मौके पर अल्लाह ऑलमाइटी रेज्ड, अब यहाँ रेज का मतलब उठाना है, लेकिन यहाँ मतलब है मबूस फरमाया। अब ये ना तर्जमा जब हम करते हैं ना लफ्जी तर्जमा, तो यूं लगता है कि अल्लाह ऑलमाइटी रेज्ड यानी उठाया। अब उठाया वाली तो ऐसी अजीब सी बात होगी ना। ये तो रेज्ड मतलब मबूस फरमाया, किसको? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अमंग देमसेल्फ, जो उन्हीं में से थे, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, ताकि वो इंसानियत को उठा सके, जो इंसानियत की को नुक्ते मुकाम तक पहुंचा सके, जो कि एक जगह एक मुकाम से निकाल सके, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से निकालें, इन टू द लाइट ऑफ फेथ, और उनको ईमान की रोशनी में लेकर आ जाए। यहाँ देखिए, अब इसको तर्जमा देख लीजिएगा, ये तो लफ्जी तर्जमा किया। अब देखें इसको बेहतर अंदाज कैसे कर सकते हैं। 5वीं 6वीं सदी ईस्वी में इंसानियत तबाही के दाने पर खड़ी थी। ऐसा लगता था कि वह तहजीब जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई थी। वक़्त के इस मरहले पर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जिसने बनी नो इंसान को गुमराही से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाना था। ठीक है ना? यहाँ पे देखें, into Allah Almighty raised Rasul among themselves to lift, जिसने लिफ्ट करना था, टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्रॉम इग्नो जहालत से और लाइट की तरफ लेकर आ जाता। बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि आपसे जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। देखिए बेटा, आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है 4000 years, यहाँ पे 4000 नहीं लिखा हुआ। बेटा ये भी याद कीजिएगा, जब ये years एज ए नाउन के तौर पर आए तो उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, और आमतौर पर जारी बात एडजेक्टिव की जमा नहीं होती। और ये न्यूमेरिक डिजिट दी हो यहाँ पे, ये 4 न्यूमेरिक्स हैं, तो उसके बाद हम एस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ऑन द वर्ज मैंने आपको बताया ये प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज होगा। ठीक है जी, तो इस तरह की बेटा चीजें हम साथ साथ ये भी करते जाएंगे। चलें बेटा जी, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2, सॉरी पैराग्राफ 4, जो आपके लेसन के तरतीब से चलता आ रहा है उसके मुताबिक, तो ये पैराग्राफ 4 है। हमारे अभी के लेसन का 2 था। आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Well, let's have a difficult word. Spend mean guzarna, sarf karna. Solitude mean tanhai, gosha nashini, maraqaba, मेडिटेशन और फिक्र, सोचो विचार। रिटायर का मतलब गोशा नशीन हो जाना, चले जाना। आपने मतलब सुना होगा कि वो रिटायर हो गए, यानी उसने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी की और अब आराम से रेस्ट करने के दिन है, वो सुकून से एक जगह पर बैठ के आराम करेंगे। रेस्ट करने को भी रिटायर कहते हैं, असल में आराम करने को रिटायर कहते हैं। अब रिमेम्बरेंस का मतलब याद होता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मीनिंग बनेगा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल हुई, तो आप अपना ज़्यादातर वक़्त कोशा नशीनी और गौर व फ़िक्र में गुज़ारते थे। खाने पीने के साथ आप गार हिरा में कोशा नशीन हो जाते और कई-कई दिन और हफ़्ते अल्लाह ताला की याद में गुज़ार देते। ठीक है, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेज़ इन इट। इन द केव ऑफ हिरा, बेटा ऑन द केव ऑफ नहीं है। ही यूज्ड टू का मतलब उनकी आदत थी, ये किया करते थे। वो रिटायर हो जाते, कोशा नशीन हो जाते थे विद फूड एंड वाटर, पानी और ग़िज़ा के साथ, एंड स्पेंड और गुजारते थे अपना वक्त, दिन और महीने वहां गुजारते थे, हफ्ते और दिन गुजारते थे अल्लाह ताला की याद। ठीक है जी, चलिए जी, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट्स नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5। The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity.
He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Let's talk about the difficult words. Period means duraniya, arsa muddat, close khatam hona, band hona, overflowing libraise hona, chalakna, profound ka matlab gehra या गहरी, compassion का मतलब हमदर्दी, pressing urge शदीद ख्वाहिश, earnest desire, earnest पूरी शिद्दत के साथ ख्वाहिश होना, eradicate खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना, wrong बिल्कुल, बातिल गलत, belief अकायद, social समाजी समाज मुआशरती, evils बुराइयां, cruelty जुल्म, injustice ना इंसाफी. और मोमेंट का मतलब लम्हा होता है, अराइव का मतलब आना, बिस्टोर्ड विद का मतलब अता किया जाना, कन्वेट का मतलब पहुंचाया, और फॉलोइंग का मतलब दर्ज झेल होता है. ठीक है जी. द पीरियड वो लम्हा, वेटिंग इंतजार का, हेड कम खत्म हुआ, हिज हार्ट उसका जो दिल था. अब यहाँ पे दिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो जब हम उनकी बात करेंगे तो जरूर बेटा पढ़ा करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम. जरूर से बेटा जरूर पढ़ा करें, बहुत 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 जबरदस्त चीज है. हिज हार्ट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो ओवरफ्लोइंग हो गया, यानी लिबरेज हो गया, छलक गया. किस चीज से? विद प्रोफाउंड, गहरे, कंपैशन, अकीदत, मोहब्बत से. किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और इंसानियत का दर्द लेकर जो है ना वो दुनिया से गए, और आखिरी अल्फाज भी उनके थे उम्मती उम्मती उम्मती. He had a pressing urge. Pressing का मतलब है शदीद ख्वाहिश थी उनकी, to eradicate, वो खत्म कर देते, जड़ से उखाड़ देते. किसको? रॉन्ग बिलीव्स को, गलत अकायद को, सोशल इवल्स, माशरती बुराइयों को, समाजी बुराइयों को, क्रूअलिटी, जुल्म को, इनजस्टिस, नाइंसाफी को जड़ से उखाड़ देते. द मोमेंट हैड अराइव्ड, और वक्त आ गया था, व्हेन ही वाज टू बी बिस्टोर्ड विद. अच्छा बेटा यहाँ देखें बिस्टोर्ड विद लिखा हुआ है. आप में से कोई बच्चे तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, वो अगर उनकी प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ी सी भी नो हाउ है तो बेटा मैं आपको मजीद इसमें इल्म में इजाफा फरमाऊं बेटा आपके. बेटा देखें बिस्टोर्ड के साथ ये ना विद प्रेपोजिशन, और नबूवत नाउन है. तो बेटा प्रेपोजिशन होता ही वही है जिसके बाद नाउन आ रहा हो. तो जैसे नबूवत नाउन है और इसके बाद प्रोनाउन भी आता है, तो बेटा आमतौर पे सुनते हैं बिस्टोर्ड अपॉन वर्ड होता है. तो बिस्टोर्ड अपॉन नबूवत, तो फिर अपॉन होना चाहिए था. नहीं बेटा ऐसा नहीं है. बिस्टोर्ड अपॉन के बाद अगर पर्सन का नाम लिखा हो, बिस्टोर्ड अपॉन हिम, bestowed upon the servant, bestowed upon the teacher, bestowed upon the soldier, तो फिर बेटा जी अपॉन या ऑन आता है. लेकिन अगर कोई चीज जिसको तोहफे के तौर पर दी गई हो, मतलब नबूवत तोहफा था, तो फिर हम bestowed with कहते हैं, जिसका मतलब होता है गिफ्टेड विद. तो he was to be gifted with नबूवत, तो ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, मतलब ग्रामर की चीजें, तो आप होप सो यू विल एंजॉय दिस थिंग्स विद द पैसिव टाइम. तो टू बी bestowed with नबूवत होगा बेटा, अपॉन नहीं आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, क्योंकि आगे वो गिफ्टेड चीज का जिक्र किया. अगर पर्सन का जिक्र होता तो अपॉन होता. अल्लाह बिस्टोर्ड अपॉन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद नबूवत, ऐसे भी हो सकता. तो बिस्टोर्ड विद नबूवत. वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब वो हिरा की गार में मौजूद थे, हजरत जिब्राइल इस्लाम के वो आए और कन्वेट पहुंचाया टू हिम उनको द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, योर पैसेज. अच्छा बेटा आप इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं बेस्ट अंदाज से कैसे ट्रांसलेशन की हुई है. ट्रांसलेशन है. इंतजार का अरसा खत्म होने को था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था. आप गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म, नाइंसाफी खात्मे की शदीद ख्वाहिश रखते थे. और वो लम्हा आन पहुंचा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था. एक रोज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे, तो हज़रत जिब्राइल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दर्जिल पैगाम पहुंचाया. और बेटा पैगाम ये था, read in the name of thy Lord who created man from a cloth of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. So thy means तुम्हारा, yours, old English. congealed मतलब जमा हुआ, लॉर्ड का मतलब परवरदिगार या रब, और बाउंटीफुल फयाज करीम मेहरबान, और क्रिएटेड का मतलब पैदा फरमाया, तख्लीक किया, और टॉट का मतलब सिखाया, और क्लॉट का मतलब लूथड़ा होता है, खून जमे खून से बनाया, और फटकी को भी हम कहते हैं. तो ये बेटा इसका तर्जमा है. आप अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने पैदा फरमाया इंसान को जमे हुए खून के एक लूथड़े से पैदा फरमाया. पढ़िए, और आपके परवरदिगार सबसे ज्यादा करीम है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया इंसान को, सिखाया जो वो नहीं जानता था. लें क्लास, लेट्स कॉल इट अ डे for now, and inshallah we will
come up with another video in which we will conclude the remaining paragraphs with the translation. Thank you very much for your patience listening, and I hope so you've enjoyed it. And let's conclude this session with the prayer that Allah Almighty blessed us with health and save us with all kind of diseases around or outside there. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.